Everyone, welcome back. So, how are you today? Holi is very near. So everybody is excited about Holi. Yes. Good afternoon, Avni, Anushka, Anjali. Good. Thank you, Anjali, for all the emojis. Ranjit, good afternoon. Nishi, Anagha, Tanay, Nithishri, Tambeshwari, Anuj, Bhargavi, and Nancy. A very good afternoon. Ashinka, Nandhar, Nandha, Nanda, if you missed it, you can watch it on the YouTube, okay? It will be uploaded. Don't worry. All the others are also uploaded. Vaishnavi, good afternoon. Yes, Anuj, Nikhil, Mohammad, Sakshi, a very good afternoon. Okay. Recording in progress. Hardin. Okay, so we start with this. Yes, good afternoon, Balaji. Yes, that part will be done on the day a lecture is allotted. Okay, so we I have requested for lectures because see this the whole schedule has already been shared with you. So the this schedule is not to be disturbed, and then one of the days extra lectures will be allotted, and then I'll cover all the doubts that you have and all the things that we need to do. We'll be doing that time. Okay. Yes. Okay, Renuka, Balaji, Hital, Sana, a very good afternoon. So today we're going to talk about index numbers. Um, this is a very practical chapter. Okay, and yes, before everybody starts asking, let me tell you what is the weightage. Weightage for index numbers is 10 to 15% of the statistics. So you can get a good question and on this. Now, what we would like to talk is like, have you seen that you keep buying a pack of chips for 10 rupees only? Okay. But what happens with the quantity? Quantity increases or decreases? Quantity is decreasing. The amount of chips you could get a few years back for 10 rupees is was more, and now today you're going to get is less in quantity. So what happens here is what is the value you are getting? P into Q. Okay, value is price into quantity. What happens to the quantity? It is decreased. So, or even if you see burgers, there also you can see that the 20 rupees burger has now shrunk in size. So all this, where you are trying to compare price, quantity, value, and you want to compare it with the, you might want to take the base as base quantity and current quantity. So some year you are going to take as the base year and using the values available there, like quantities, price, or value available there, using those as the base quantities, and then you start comparing it, and you try to get an idea about how things are changing. Okay, so index numbers is something that is very useful in statistics, in economics, and also you can see index numbers being used in the very famous example is Sensex. Okay, so NSE, BSC. So there you see the index. You are talking about index, right? So there we are doing the same thing. A little bit on a larger scale, we are trying to do that. Like the stock market index, it is giving you an idea of overall how the stock are moving. The movement
it's also an indication of the average return received by the investors. Okay, when we say the index has moved up or moved down. So with the help of index, it is easy for an investor to compare performances, because there is, when you are setting a base, you're setting a benchmark, and becomes easy for us to compare. Now we have the two stock exchanges, the BSE and the NSE. BSE is the one of the oldest stock exchanges in Asia, and then we have the NSE, which is incorporated in 1992. Okay, and it was recognized as a stock exchange in SEBI in 1993. Then we have the Nifty 50 index of the 50 stocks from 13 sectors of the economy are taken, and the index is found. And it is a real like, there is a whole buzz when the stocks are selected. Okay, so whenever new stocks are doing very well, then there is a like, everybody is looking for whether that stock will be included in the uh, 50. Okay, and now you have the NSE and the BSE. You could go to the index, you could go to the website, and you could track the index. So index value will be total capitalization on the current date divided by the total capitalization, market capitalization of the previous date. And that is how we talk about the index value. That when we see the TV, or when we look at the website, we can see, you can track it on money control. You can see CNBC Awaaz, or CNBC, the Hindi version is Awaaz, and then you have the CNBC business channel also. Okay, so those are the places where you can really see these index numbers being used. And then you should be proud that you know a little bit more than the others at your age, students who are at your age, about how the index is doing, and how, from where actually the index is being made. Now coming to the construction of index numbers. So we will be going into some methods into deep, and while others we are going to just look through. So the methods of construction of index numbers, you have the two types, the simple and the weighted. In the simple, you have again the two types, aggregative and relative. Weighted, again, you have the aggregative and the relative. In the simple, aggregative means what? Sum of the prices, current prices, upon the sum of the base year prices. So this is what, you add the prices of the current year upon the earlier year. Okay, so this is how we go about it. Then you have the relative. So one of the ways to rectify the drawbacks of a simple relative is to construct a simple average of relatives. Okay, under this we invert the actual price for each variable into percentage of the base period. So you take the base year, you call it as 100, and then you convert the current year into percentage based on the base year. Okay, and then you get the value. So you may have 100, then you may have 113 the first year, then in the second year you may have, say, 125. Okay, and so on. The index number is the average of all such relatives. So you have these average indexes, then you add them, and then you find the average of these relatives. One big advantage of price relatives is that they are pure numbers. So what happens? This is a pure numbers, and price index numbers computed from relatives will remain same regardless of the units by which the prices are measured. Okay, this method thus meets a criteria of unit test, which we're going to talk about later. So aggregate is simple. You just add them, P1, P2, P3, upon the prices in the current year upon the base year. Okay, you just add them into 100. Now in weighted aggregative, those we are going to talk about the all the Lapas, Pache, Fisher, and then all those we are going to study in detail.
And relative is summation Pn upon P0 into bracket P0 into Q0 upon summation P0 Q0 into 100, which is equal to Pn Q0 summation P0 Q0. Okay, this is the formula for the relative. Okay, we are going to more focus on the others, the Laplace, the Pache, the Fisher. Okay, those we are going to consider in detail. Mahi, yes, I will suggest how to score good in maths. Okay, after this, like when we come back from the break, so at 3 o'clock, I will tell you how to do well in maths. Yes, Harleen, excited for the lecture? Yes. हाँ, हिंदी में भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Yes. Mohammed, this font, no, this is just I've just copied. You can also see it in the book. I just wanted to put it over here. So what it the relative means, you have to find the price taking 1 year as a base year, find those relative numbers, and then find the average of the relatives to give you the simple relative method of calculating the index. Okay. हाँ. हिंदी में बताए तो जो हमारा शेयर मार्केट है उसमें जो इंडेक्स है, सेंसेक्स है, इंडेक्स है, जो बीएससी है, एनएससी है, उसमें हम जो है ये इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं. जब वो बोलते हैं कि आज इंडेक्स की वैल्यू इतनी है, मतलब क्या होता है, वो जो इंडेक्स शब्द यूज कर रहे थे वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम उसका हम स्टडी कर रहे हैं. उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्रिएट नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर बोलेंगे, कि किस तरह से उसको बनाते हैं. तो जहाँ पे एनएससी, जैसे निफ्टी 50 बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो एनएससी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें से जो टॉप के 50 कंपनीज है, जो 13, मतलब सारे एक सेक्टर में से नहीं लेते, मतलब कुछ आपके बैंकिंग में से होंगे, कुछ आपके एफएमसीजी में से होंगे, है ना, उस तरह से आपके अलग अलग सेक्टर्स में से, 13 सेक्टर्स में से आपके कंपनीज लिए जाते हैं, और उनका जो प्राइस है उसको मिला के जो है वो इंडेक्स की वैल्यू आती है. तो वो जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कि अच्छा, शेयर मार्केट आज चढ़ा, गिरा, ये जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, वो इंडेक्स नंबर कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला, उस हिसाब से बोलते हैं. और फिर जो करंट होता है उसमें क्या करते हैं, हम आज का जो है करंट प्राइसेस जो हम लोग देख रहे हैं, उसको हम अगर कल के प्राइसेस से डिवाइड करेंगे, तो हमको जो मिलता है वो करंट इंडेक्स की वैल्यू मिलती है. तो वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ है उसके बारे में हम बात करें, उसमें दो टाइप है, एक सिंपल है, एक वेटेड है. सिंपल में जैसे हमने दिखाया उस तरह से है, और वेटेड वाले जो एग्रीगेटिव है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी. और जो रिलेटिव है उसका फॉर्मूला मैंने देख रखा है. वेटेड में क्या होता है, हर चीज को इक्वल नहीं ट्रीट करते, कोई जो पैरामीटर्स है वो ज्यादा अफेक्ट करता है इंडेक्स को, कोई कम करता है, उस हिसाब से हम उसको वेट देते हैं. ठीक है, हिंदी में भी बता दिया आपको. Now, what are index numbers? So let us now go to what is index number. So index numbers are a way to measure changes in a particular variable over time. Hmm? This over time is very important. They are commonly used in economics and statistics to track changes in things like prices, quantities, or values of goods and services. Index numbers helps us to understand how prices, quantities, or values change over time by providing a standardized way to measure these changes. Okay. तो हमें इंडेक्स नंबर से क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है कि हमारा जो प्राइस वैल्यू या क्वांटिटी है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड हम डेवलप करते हैं. बहुत सारी मेथड्स हैं, उसमें से कौन सा हमें यूजफुल है वो हमें डिसाइड करना है. ओके. यस अनुज, वेरी गुड. नाउ जैसे मैं हर बार करती हूँ, मैं कुछ खाने का एग्जाम्पल ले लेती हूँ. मेरा ये नहीं बात है,
आपका लंच हो गया होगा तो इसलिए ज्यादा तो भूख नहीं लगी होगी, लेकिन खाने के एग्जाम्पल ना आपको याद रह जाते हैं। खाने का है, स्पोर्ट्स का है, वैसे वाले एग्जाम्पल मैं ज्यादा लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके। नाउ फरेरो रोशे के चॉकलेट सबको मालूम है, तो वो डब्बे में आते हैं, ठीक है। नाउ आज जैसे मेरा अगर है कि मैं फरेरो रोशे का एक डब्बा लेती हूँ, फिर उसके साथ क्या करते हैं? ओके, सो लेट अस टेक फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक द प्राइस ऑफ द फरेरो रोशर चॉकलेट बॉक्स इज 200 रुपीज 100 टुडे। एक बॉक्स है, उसका 100 रुपए कीमत है। नेक्स्ट ईयर द प्राइस इंक्रीजेस टू 120। एवरी ईयर आई टेक वन बॉक्स, ओके, आई बाय ओनली वन बॉक्स। देखो, आई एम सो स्मार्ट। आई टेक ओनली वन बॉक्स ऑफ chocolate so that every time I get a good result, or after, not even result, once I finish my exams, once I know I studied very hard and I've given my exam, so on the last day of my foundation paper, what should I do? I should go and buy a box of chocolate. So it's costing me 100 rupees. Next year it is costing me 120 rupees. Okay. Hmm? Then we calculate the price index number. Okay, we are going to take all other things also, but I'm just trying to explain the concept here. Price index number. So what is the price index number? Current price upon base price into 100. आज की तारीख में कितने का आ रहा है? 120 रुपए का। लास्ट ईयर वो कितने का आ रहा था? 100 रुपए का, और इंटू 100 करना है मुझे, तो वो कितना आ गया? 120। मीन्स व्हाट? इससे मुझे क्या पता है? क्योंकि मेरा बेस 100 है, तो मुझे क्या पता लगता है कि देर इज अ 20% इंक्रीज इन प्राइस। ये सिंपल एग्जांपल है, तो बोलोगे आप ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 20 रुपए से बढ़ रहा है 100 रुपए की चीज। ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ एग्जांपल समझ में आने के लिए, बाद में हम एग्जाम क्वेश्चंस करने ही वाले हैं। ओके, सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट looking at the price index numbers, I can find out whether the prices have increased or decreased during the current year. Okay, from the base year to the current year. Next is quantity index number. This measures changes in the quantity of goods and services consumed or produced over time. Okay, consumed or produced, बनाए हैं या खाए हैं, मतलब यूज किए हैं। अब पीछे से ये वाला है मेरा चॉकलेट का एग्जाम्पल है। इफ नेक्स्ट ईयर, जैसे हर साल मैं एक बॉक्स लेती हूँ, ठीक है, अभी ये बात की ना एक बॉक्स, नेक्स्ट ईयर मैं दो बॉक्स लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मेरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा? इस साल कितने लिए? दो। लास्ट ईयर कितने लेती थी मैं? एक। तो इंटू 100, तो कितना आ गया? ये आ गया 200। सो इससे क्या मिलता है मुझे? इंडिकेट्स अ डबलिंग ऑफ द क्वांटिटी परचेज। इट इंडिकेट्स अ डबलिंग ऑफ द क्वांटिटी परचेज। फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया था मैंने? So I consumed one box of Ferrero Rocher. It was costing me 120. But what was the base year price? 100. So 120 upon 100, I got a 20% rise. Next, I'm talking about the quantity index number. So I'm saying that my consumption has doubled. I was eating one box last year, and this year I am consuming two boxes. So the quantity has doubled. Oh, Adnan, I'm so sorry. Okay, yes, next time I won't. बोल रहे हैं कि don't give food example because his fast is going on. Okay, yes, I'm really very sorry for that. I will take that into consideration. Okay, so this is the last time I'm using this example. We'll shift to some other example. So value index numbers, it means a change in the total value of goods and services over time. So in the base year, last year, what was I doing? I was consuming one box at the rate of rupees 100. So how much was that? 100 rupees. Now current year,
I'm consuming 2 boxes at the rate of rupees 120 each. So how much is this? 240. So then, what is this? Value at 0 and value at 1. So what is the value index number saying? It is equal to 240 upon 100 into 100, which is equal to 240. Okay. So it means there is a 240% increase of a different perspective on price changes over time. Okay. इसको याद रखना, अभी किसमें क्या चेंज होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है याद रखने के लिए। तो मैंने क्या किया है, इसको बोला है एलबी, इसका बोला है पीसी। तो लास्ट बायर यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज, एलबी क्यू कर लो चाहिए तो, क्वांटिटी पीसी क्यू। लास्ट बार में मैं क्या करती हूँ, बेस ईयर क्वांटिटीज यूज करती हूँ, पाशे में क्या करती हूँ, करंट ईयर क्वांटिटीज यूज करती हूँ, और फिशर तो इट इज जस्ट अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट बायर एंड पाशे। ओके, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे क्या है, मुझे बेस क्वांटिटीज लेना है कब, जब मैं लास्ट बायर यूज करती हूँ, और पाशे में मैं करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करती हूँ। Okay, Anushka is saying 1 piece of Ferrero Rocher chocolate is 40 rupees. Okay. So, Fisher is a compromise between the two, aiming to minimize the biases that may be present in either of the measuring. Okay. Why this is important is, why Fisher is important is, that also we are going to study. So it is often considered a more accurate price measure of price change because it incorporates information from both base year and current year. So that is why Fisher, because it is using both last buyer and partial, it is considered more accurate measure. Yes, Anuj, last buyer में base और partial में current. ये वाले फॉर्मूला अभी हमने जब एग्जाम्पल यूज किया था, हमने वही फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ना, तो हमारे को थोड़ा डर लगता है कि अरे बाप रे इतने सारे फॉर्मूले है। बट हम अभी जो हमने एग्जाम्पल में किया, तो हमें एकदम इजीली कर दिया ना, उसी तरह से इजीली आपको फॉर्मूले याद करने हैं, याद भी नहीं करने पड़ेंगे, इंट्यूटिवली आपको आ जाएंगे। सो प्राइस इंडेक्स इज व्हाट, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ द करंट प्राइसेस upon summation of the base prices. Okay, this is price index number into 100 होता ही है। Okay, when we are talking of index number, ये this is a quantities, sorry, of current year, current period upon quantities of base period. Okay, and then you have summation of values of current period upon values of base period. मुस्कान, पेज नंबर चाहिए आपको? मुस्कान, पेज नंबर 18.17. The summary has all these formulae. Those are written over there. Okay, all the formulas are written over there. हाँ मुस्कान, वेरी ट्रू। फॉर्मूले वर्ड्स में लिखे होते हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, सिंबल्स में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और फिर वो 1 2 1 0 0 1, उसमें तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज इजी, मतलब हम लोग इसीलिए एग्जाम्पल ऐसा करते हैं यूज, जो हमें अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो फिर सिंबल्स में इतना गड़बड़ नहीं होती। हाँ, Tanay is saying even on 18.5 you will see all these formulae. Okay, so 18.5, हाँ
Yes. So every formula is given on a different page, and then I have compiled them and put it in one slide. Okay. And that is there on the PDF that is uploaded. Okay. So now let us talk about the price indices. These are indices used to monitor the changes in price over time. As inflation drains the purchasing power, it is necessary that we separate the real income from the nominal income. You know about this in economics. So, we take the concept that you know already in economics further, and we are trying to find out that if I take away the inflation, what is the effect that is happening on the income. Okay, so we are able to separate the real income from the nominal income. The last buyer and partial calculation are based on how much will be spent on the same basket of goods. Last buyer uses the basket from the base period, while partial uses the current period basket. Okay, वो मैंने बोला ना LBQ. Last buyer uses the base current basket, while partial uses the current quantities. Okay. A last buy of 100 means that the basket of goods from the base period will cost him the same today. That is the current period. It was costing him the base period. It tells us by how much we should increase a person's income to offset the effect of inflation. Okay, so this is also a very important sentence. Okay, what does this price indexes give us? It gives us how much should we increase a person's income to offset the effect of inflation. Okay, because when we see that the prices are increasing and the person's salary is not able to keep up with the prices, what will happen is it is going to impact how he works in the office. जब आदमी काम करने जाता है तो वो टेंशन फ्री होना चाहिए जहां तक हो सके। तो वो कैसे होगा अगर महंगाई बढ़ रही है और उसकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही है, तो क्या हो जाता है कि उसको चिंता लगी रहती है, और जब उसको चिंता लगी रहती है वो काम ठीक से नहीं कर पाता। तो ये जो प्राइस इंडेक्सेस है वो आपको उससे आपको कंपनीज को आइडिया मिलती है कि कितना हमें उसकी आमदनी बढ़ानी चाहिए ताकि वो जो राइज इन प्राइसेस है उसको उसकी सैलरी सस्टेन कर सके, वो उतना उसको आराम से उसको थोड़ा सुकून मिल सके उस सैलरी से। ठीक है, so it tells us how much we must increase a person's income to offset the effect of inflation. महंगाई को किस तरह से ऑफसेट करना चाहिए। और इसमें हमने जो सिंपल वाले देखे और फिर वेटेड मेथड्स में ये वाले सारे मेथड्स हम देखने वाले हैं। इसमें याद रखिए आपके पास प्राइस इंडेक्सेस है, क्वांटिटी इंडेक्सेस हैं और वैल्यू इंडेक्सेस हैं। हम लोग एक एक लेके हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि फिर आगे वाले जो हैं आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, यस मुस्कान गॉट इट, ग्रेट। हमने बोला लास्ट पायर पहला वाला कर रहे हैं हम। फर्स्ट वी आर डीलिंग विथ लास्ट पायर बेस क्वांटिटी। ओके, सो both in the numerator and the denominator we are going to use the base quantity. So last pair is saying sum of price of the current period into base year quantity. Price in current year upon summation of price, अभी पतला हो गया, price in base period into base year quantity और इसको into 100। सी ये जो समेशन है ना ये पूरा इसके लिए है, प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद
और उसको सम करना है। ये भी जो समेशन है पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका समेशन लेना है, ठीक है। लिखते समय हम लोग सिर्फ समेशन लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ फर्स्ट वाला ऐड होगा। मल्टीप्लीकेशन करके फिर ऐड करना और इंटू 100 करना है। It uses the base year quantity, so makes the comparison more meaningful. So change in the price index is attributable to changes in price. It, however, does not consider the changes in the buying pattern. Okay. So what is the advantage is that uh, it is going to give me what is the change in the price index is due to the change in the prices. When the price changes, you get a change in the price index. सो बट व्हाट हैपेंस इज, जो नॉर्मल तरीका क्या होता है कि किसी भी चीज की कीमत जब बढ़ जाती है तो आदमी क्वांटिटी कंजम्पशन में चेंज लाता है ना। कोई भी चीज महंगी हो जाती है तो घर में, जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप देखेंगे आलू प्याज से लेके देखे, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसका कंजम्पशन धीरे से सटनली कम होता है। सो वो जो है वो फैक्टर इन नहीं हो रहा है यहाँ पे। वी आर नॉट फैक्टरिंग इन द चेंजेस इन द consumption pattern based on the change in the price. Okay, anything that becomes cheaper, people tend to uh, people are going to tend to buy it more. Okay, so that happens. Like for forget about the food example, things like mobiles. Okay, initially when the mobiles were launched, what happened was fewer people were buying because that time the landlines were more comfortable, they were cheaper. As the prices of the mobiles have come down, so what has happened, it is so you may get a last buyer index as low, but actually what has happened, there is going to also be a change in the consumption. But here what we are trying to see is what is the change in the price. So what last buyer is going to give you is an indication about the changes in prices. Okay, then we are going to talk about the Pache. Yes, Renuka has understood, Muskan has understood. Okay, सबको अभी लास्ट बार समझा है क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो आप जो है वो लाइक बटन दबा दीजिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाशे। हमने क्या बोला? पाशे वी सी क्यू। पाशे is talking about the current quantities. So current year's quantities are used as weights. Okay, Pashe's index is summation Pn Qn upon summation P0 Qn, which is equal to summation of current year price into current quantity upon summation base year price into current quantity into 100. It uses current quantities, so current highlights current buying patterns. But due to this, we cannot attribute the changes in the price indexes to changes in prices only. Okay, so what we are doing is we are talking, saying, or we're considering the same amount of current quantities. So it is, we are using, because we are using the current quantities, we are not able to find out the impact of the price. So last pair is going to give you the impact of the prices, and Pasha is going to give you an impact on the current quantities. Then this is somewhat in between. Here what we are doing, taking as weights is by taking the average. Okay, we are not talking about the current quantity or the base quantity. Here what we are doing, we are trying to find the average quantity. Okay. Any questions up till now? Yes, Anuj is saying understood. Priyanka, crystal clear. Harleen is saying yes. Sakshi is understood. Kambeshwari. Okay, you are talking about the formula. Yes, Anuj. Yes, excellent.
Now Marshall-Edgeworth index. Base year and current year's quantities are used as weights by taking the average. So normally average का formula क्या होता है? Qn plus Q0 upon 2. लेकिन वो न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो क्या हो जाएगा? उन दोनों का आके वो 2 वाला कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू summation of current year price into average quantity upon summation of base year price into average quantity. Okay. So this is what Marshall-Edgeworth is using. हाँ अंजलि, जीरो का मतलब फॉर्मूला में जहां जीरो लिखा होगा उसका मतलब बेस ईयर है. हाँ अनुज, उसमें एवरेज लेना पड़ता है. हाँ मुस्कान जी, अच्छे से क्वेश्चन समझे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. वो भी होने वाला है. ठीक है. So we have talked about last pair. We have talked about Pache. We talked about Marshall-Edgeworth. And now we are talking about Fisher's ideal price index. Okay. See, why we need to understand the formula is that once you've understood the formula, any type of question comes, you know already the concept. Okay. So that is why we are understanding the formula, and then we are going to solve certain questions. Already in the PDF also I've taken questions, like more questions than there are there, so that for your understanding also and how these things are calculated. Okay. Now Fisher is the geometric mean of Laspire and Pache's indexes. Okay, geometric mean आपको याद है? We said geometric mean was if A and B are two quantities, their square root of their multiplication will give me the geometric mean. Okay, then we said that the geometric mean square is equal to multiplication in the of the two numbers. Okay, so here what we are saying is, we are saying that it is the geometric mean of Laspire and Pache, which is equal to, so Fisher is equal to square root of L into P, or F square is equal to N into P. Okay. And from this formula also you can see that this is Laspire, this is Pache. Okay. Quantity, current quantity, these are using the base quantity. So this is Laspire. And because you are using this current quantities, it is Pache. Okay. Now we go to chain index numbers. हाँ तांबेश्वरी, 100 वाला जो है ना इंटू 100 वो तो होता ही है. ठीक है. ये जो 100 है ना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ जो है ना नंबर डेसिमल में ना आए और 3 डिजिट नंबर समझने में और उसमें आसानी रहती है, इसलिए उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो बहुत जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. Okay, chain index numbers. When conditions change very fast, we cannot work with the fixed base. Okay, if things are moving very fast, we are not going to use the fixed base, because something that is happening 4 years back, I cannot take it as the base. So in that case, the relatives of each year are first related to preceding year
which are called as linked relatives, and then they are chained together by successive multiplication to form a chain index. मतलब जब हम एक साल को बेस ईयर नहीं ले सकते तो हमको क्या करना चाहिए, इस साल को लास्ट ईयर से लिंक करना चाहिए और उस लिंक को हमें चेन में बनानी चाहिए। सारे लिंक्स है ना, उसको इंटरकनेक्ट कर लेना चाहिए। ऐसी वाली माला देखिए ना आपने, वो मेटल वाली आती है, वो अरशद वारसी ने भी पहनी थी इसमें, मुन्ना भाई में। तो इस तरह की होती है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फर्स्ट क्रिएटिंग द links, and then these links are then chained, okay, by successive multiplication to form a chain index. So we here what, when we are using the chain index numbers, first we must use the link relatives, and using the link relatives I must form the chain index numbers. So what is the chain index number? What is the formula? It's saying link relative of the current year into chain index of the previous year upon 100. Okay. Now, what is the link relative? Link relative is current year price upon the previous year price. वो जो सिंपल वाला किया था ना हमने, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, वो वाला फॉर्मूला आप यूज हो रहा है। Now, you want me to show you? Okay. ये वाला है ना, Pn upon P0. That is what we are using right now. Okay. So once again, I'm telling you what is chain index number. When conditions change fast, when the conditions change fast, we cannot work with a fixed pace. The relative of each year are first related to each other. That is, I first form the link and then I form the chain. And then I have the formula. Chain index is the link relative of the current year into chain relative of the previous year upon 100. And what is the link here? Link relative current year price upon previous year price. Now we are taking this example. बुक में ये एग्जाम्पल बड़ा सा दिया है, मैं आपको 4-5 का करके दिखाती हूँ ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं। इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर दिया है ना, ये हमारा पहला साल है ना, या 1991 से ये वाला डेटा शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या करना है, इसको जो है, इसको हमें 100 लेना है और इसको भी 100 लेना है। ठीक है, ये बेस जो है उसको 100 से शुरू कर रहे हैं हम। अब हमें क्या करना है, how do I find the link relative? What is the formula say? Link relative is current year price upon previous year price. Okay, link relative is current year price upon previous year price into 100. ठीक है। Now what is the chain relative? What is the formula? Link relative of current year into chain index of previous year upon 100. So this is link relative of the current year into chain index of the previous year upon 100. ठीक है। Now for the first year, what is the price? 60. What was the earlier price? 50. What is the this current price upon previous price? So 60 upon 50 into 100, which is equal to 120. Okay, which is equal to 120. Now लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना आ गया, 120। तो ये हो गया 120 इंटू करंट इंटू द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर कहाँ होगा, 100, ये वाला 120 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100, ये हो गया 120। ठीक है, इसमें जो है, इसको आप लिख सकते हो कि
link relative of the n into current index, chain index of the n, और 0 वाला जो सिंबल यूज किया है बुक में वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है. Now 1993, what will happen? Current year price upon previous year price. Okay, for 93, can anybody give me the values? What will be the link relative? Sonam, yes, you've understood? Yes. Sakshi is saying concepts are clear, interesting chapter. Very good. हाँ, बेस हम 100 लेके करते हैं, किसी भी साल को बेस बनाते हैं उसको 100 लेके करते हैं ताकि हमें कंपैरिजन में इजी हो जाता है. ठीक है. परसेंटेज है ना, इसलिए साक्षी. Anuj is saying 103.33. Nishi is saying 103. So what should be the link relative? Current year price कितना है? 62. Previous year price कितना है? 60 upon into 100. ये हो जाता है 103.3. Okay. I come to here. Link relative of the current year. What is the link relative of the current year? 103.3. 103.3 into the chain relative. Chain relative of the previous year. Chain relative of the previous year कितना है? 120 into 120 upon 100. Okay, and how much is this? This is equal to 123.96. Okay, very good. Nishi is on 1996. Yes, Sakshi is understood. Sonam understood. Anuj, Priyanka, Kritika, Anushka. Very good. So quickly I will just finish this. 65 upon 62 into 100. ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है ये. 65 upon 62 upon 104.83. Then this will be 104.83. ये वाला नंबर लिखिएगा into ये वाला नंबर लिखेंगे 123.96 upon 100. दिख नहीं रहा है ना. 4. This is 104.83 is equal to how much? This is equal to 129.96. Here it will be 70 upon 65 into 100, which is giving me 107.69. And then this will be 107.69 into previous year 129.96 upon 100. How much is this? This is equal to 139.93. Okay. Yeah, very good. Sonam, Sakshi, Anush, Kritika, Anushka, Renuka. Excellent work. Excellent. Okay. So you can compare it with the example that is there. Now, if Laspire index is called as L, Pache index is called as P, then Fisher index is given by F square is equal to LP, F is equal to square root of L into P. Okay, so F square is equal to L into P. मुस्कान बोल रही थी ना कुछ एग्जाम्पल लीजिए. तो चलिए हम थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं. If Laspaire's index number is 90 and Pache's index number is 160, find Fisher. This is the very common example that you can get. So I have F square is equal to L into P.
डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट लिखने से अच्छा ना, हम अगर उसको पहले स्क्वायर वाली वैल्यू निकालें और फिर डायरेक्टली मोबाइल अपना कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एल कितना है 90, पाशे कितना है 160। वी विल राइट, इफ यू वांट आई विल राइट इट फॉर वन सम। लास्ट पेयर index number is equal to 90, purchase index number is equal to 160. Okay, so f square is equal to 90 into 60. So 90 into 160 I'm getting as 14400, and f will be equal to square root of 14400, which is equal to 120. So f is equal to 120. अरे वेरी गुड सोनम, ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाने के लिए। देखिए, अगर हम हाथ से लिखते तो 9 into 5 लिखते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जो ये वाला यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, तो कभी कभी ये लगता है ये एक्स है या क्या है। तो इसीलिए जब मुझे मल्टीप्लिकेशन दिखाना होता है मैं ऐसे दिखा देती हूँ। तो जो स्टार होता है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ओके, सो गुड नैन्सी, अंजलि, रेणुका, साक्षी, प्रियंका, अनुज, ओके, रामेश्वरी। हाँ, तांबेश्वरी बढ़ रहा है क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है। वो बोल रही है यहाँ बढ़ रहा है चेन इंडेक्सेस। तांबेश्वरी यहाँ क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी चीज के प्राइस कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पुराने फोन का आपकी दुकान है, सेकेंड हैंड फोन्स की। तो उसमें उस फोन की कीमत या आपका कोई जो एसेट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी नहीं ना, वो कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि चेन है इसलिए वो बढ़ रहा है। वो किस चीज की चीज है वो उस पे बहुत डिपेंड करेगा। ओके, yes, Muskan has also understood. Now let us take the next sum. If Fisher's index number is 150 and Pasha's index number is 144, find the last pair's index number. अब इसमें क्या किया है? फिशर की वैल्यू दी है। फिशर की वैल्यू कितनी दी है? 150। लास्ट पायर कितना है मालूम नहीं। पाशे कितना है? 144। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट। सो एफ स्क्वायर मतलब 150 स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू पाशे कितना है? 144। तो लास्ट पायर कितना है? 150 होल स्क्वायर अपॉन 144, विच इज इक्वल टू 150 into 150 is 22,500 divided by 144, 156.25. 22,500 upon 144 gives me how much? 156.25. Okay. Okay, let us take one more sum before we go in for the break. If last pair's index number is 250, last pair is 250, Parshe is 160, find f. So f square is equal to 250 into 160. So f square is equal to how much?
250 into 160 40,000 और उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 200. So this is equal to 40,000. F is equal to square root of 40,000, which is equal to 200. So what is the value of Fisher? Which is equal to 200. Okay. Now, this is, I specifically written this because this is Fisher's for 0, 1, but what we, 0, 1 and 1, 0. Okay. So this formula also is there. I want to just tell you, let me see the page number. Okay. So on page 18.13, okay, this formula for Fisher is there on 18.13. What does this give you? This gives you F of QnP0. Okay, QnP0 so this gives you 1, 0. Okay, QnP0 into PnQn. This gives you F10. ऐसे और F01 जो होता है, F01 जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ PnQ0 अपॉन, एक मिनट, first I will write down and then I will put the square root sign. Okay, so this also you should know. This is equal to summation of PnQ0 upon summation P0Q0 into summation P of PnQn upon summation P0Qn. 1, 2, 3, 4. Okay. Now square root of this. So F10 and F01. So both formula I have written. I would suggest is that you first find last pair and Pache and then you do the square root. ये सब कैलकुलेट करना, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना. उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक लास्ट पायर लेंगे. लास्ट पायर हमको मालूम है LBQ है. अभी यहाँ पे वैल्यूज इन्होंने तो दी हुई है सारी, उसको बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम ये वाला यूज करेंगे. लास्ट पायर इज सेइंग व्हाट? Last part says that my quantity, base quantity. So summation of current price into base upon summation of base price into base quantity into 100. ये हो गया L. उस तरह पाशे का क्या हो जाएगा? पाशे क्या बोलता है? PCQ. तो करंट क्वांटिटी यूज करना है. समेशन ऑफ प्राइस, करंट प्राइस into current quantity upon summation of base price and current. And quantity is also current into 100. ठीक है. अब L is PnQ0 upon P0Q0. PnQ0 दिया है क्या? PnQ0. This is equal to 97. P0Q0 कितना दिया? 116 into 100. This gives you the value of how much? 97 divided by 116 into 100, 83.62. 83.62. Now how much is Pache? Pache is PnQn. PnQn is 117 upon P0Qn. ये आपको लेते समय बहुत केयरफुल रहना. P0Qn which is equal to 140 into 100.
117 divided by 140 is 83.57. 83.57. Now, what do I have? Then I find Fisher square is equal to L into P. L into P is 83.62 into 83.57. So, 83.62 into 83.57. अरे डेसिमल नहीं आया. 83.62 into 83.57, which is equal to, how much was that? 6988.1234. 6988.1234. So how much is my F? F will be equal to square root of this. 6988.1234, which is giving me how much? Square root of this is giving me 83.59. 83.59. Okay. So has everybody understood how it is to be done? Yes, Anushka, Anuj, Anjali, Sonam, Muskan, Renuka, Nancy, Sakshi, Balaji, Kritika, Sunil Kumar, Sakshi, Anuj, Sonam, Priyanka, Harleen is saying yes, she has understood. Sonam has also understood. Okay, so let us take a break, and when we come back in 5 minutes, we will continue with the chapter. Break le le?
Welcome back. So there were some questions about how we should study, okay, for mathematics for getting better marks. So I'll just give you 4 5 tips on how to do. First is the famous notebook, formula notebook. I want each and everybody to have the formula notebook, and when you clear your foundation, I want you to put your photograph with your formula notebook in your Insta, Facebook, wherever like you are active on social media, and tell that yes, Rashmi ma'am had told us about the formula notebook, and here that is. Okay, that is the first thing. I'm going to tell you that it has worked wonders. You don't get overwhelmed with the formula because it's already there, and it is there written with, and always make sure you write it in your own handwriting. I know you people are very easily, you can use this like laptop, phones and stylus. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबके पास एक फॉर्मूला नोटबुक हो जो आप खुद के हाथ से लिखते हैं. ओके. दूसरा है, you must know all your tables of prime numbers, okay, up to 23. जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 2 3 5 7 11 13, वो सबके आपके 23 के अराउंड, आपके बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं. आप एक पेज पे लिख लीजिए, आप चाहे तो आपकी दीवार पे चिपका दीजिए बस. लेकिन वो नंबर जो है ना, वो आपको देख के कुछ याद आना चाहिए. लाइक मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट 241, मुझे देखना है कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं. तो कभी कभी ना कैलकुलेटर पे करने की बजाय भी आपको आंसर आ जाता है, तो यू सेव ऑन अ लॉट ऑफ सेकेंड्स व्हेन यू डू दैट. First is notebook. Second, I'm telling you that you must know your prime number tables. Third is that you must study mathematics in the morning. जब आपका माइंड फ्रेश है, जब आप सो के उठे हैं, प्रोवाइडेड यू स्लेप्ट वेल एट नाइट, आप रात को 2 बजे सो रहे और फिर 6 बजे 7 बजे उठ के पढ़ाई करने की कोशिश करें, वैसा ना करें. टाइम से सोए, टाइम से उठे. 11 साढ़े 11 मैक्स आपको पढ़ना चाहिए. उसके बाद सुबह जल्दी उठना चाहिए. 5 5 5:36, if you are able to do it, that is better. Okay, then you have to study maths every day. आप ये नहीं बोल सकते आज पढ़ाई कर ली 3 दिन बाद आपने मैथ्स को हाथ लगाया, ऐसा नहीं चलता. रोज आपका मैथ्स होना ही चाहिए. और उसके बाद जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, उसके 2 2 3 3 सम्स आपको रोज करने चाहिए. हाँ, वो जो 20 मार्क्स का है ना, वो आपका बहुत स्कोरिंग है. उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए. 5 6 कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है. जैसे बहुत छोटे सम्स है तो आप 5 6 कर लीजिए. जो अगर ब्लड रिलेशन है थोड़ा बड़ा लग रहा है, डायरेक्शन वाला अगर बड़ा लग रहा है, तो 2 3 कर लीजिए जितने. लेकिन आपका जो है मैथ्स का टाइम में अलग से आप टाइम निकाल के लॉजिकल रीजनिंग कर लीजिए. देन यू मस्ट डू थ्योरी एमसीक्यूज. एवरी चैप्टर जो है, आपके जो थ्योरी एमसीक्यूज है वो लेके आप उसका आंसर देखिए. उसका बस ये मत देखिए अच्छा मैंने डी लिखा है वहां पे भी डी है, चलो हो गया. लॉजिक आपको समझा है कि नहीं वो समझ लीजिए. ओके. So these are the basic tips that I would like to share with you. First is your notebook. Second is your table of prime numbers. Then you must study mathematics in the morning. You must practice mathematics every day. You must practice logical reasoning, especially apart from, like in mathematics today you may do a chapter on maths, and then you may do a chapter on statistics, but you should be able to do both. Apart from that, you must be able to do logical reasoning every day, and then you must do theory MCQs and appear for as many mocks as possible. Mocks देने से हमें अपनी स्पीड समझती है. कई कई बार हमारे पास सब चैप्टर्स की सब नॉलेज होता है, लेकिन आपको ये नहीं समझता, इसीलिए आपको वो भी देखना चाहिए. Okay, I hope I have I've been able to tell you. Hope those tips are helpful to you. Okay. So now let us go to this sum. अरे वाह, इतने लोगों ने पहले ही आंसर कर लिया है क्या? Okay. Yes, Ashinka, you can solve problems very quickly this way. So we have done this one.
Now let us go to the next sum. PNQN 1064, P0Q0 1170, P0QN 1100, PNQ0 1180. Find the Fisher's ideal index. Okay, so what, as I already told you, we will be using the now. What does the last pair say? Last pair is saying summation Pn Q0 upon summation P0 Q0 into 100, which is equal to Pn Q0. Pn Q0 is 1180. P0 Q0 is 1170 is equal to how much? This is equal to 100.85. Then I have Pache. Pache is summation Pn Qn upon summation P0 Qn into 100. Pn Qn is how much? Pn Qn is 1064. P0 Qn is 1100. And this is into 100. Gives me 96.73. Okay. So I have F square is equal to L into P. L is 100.85 into P is 96.73. Hundred point 85 into 96.73. 9755.220. 9755.22. So F will be equal to square root of 9755.22. $98.76. Okay. Anaga saying thank you. Yes, Anushka, you can solve maximum questions in the time provided. They have designed the question paper that way. Yes, Renuka. Yes. Very good. Anushka, Anuj, Sakshi, Balaji, Anjali. Yes, very good. Renuka also has got, Nancy has also got the answer. Sonam, why did you get 89.76? It is maybe typing mistake. Yes, yes. Okay. So let us go to the next question. What I want you to do is you just simply once you're playing around with the questions or the theoretical part, so if they ask you for the formula for Laspire, you'll be able to do it. Laspire is equal to summation Pn Q0 upon summation P0 Q0 into 100. Summation Pn Qn Q0 Pn Q0 Pn Q0 is 1990. P0 Q0 is 1360 into 100. So 1990 divided by 1360. So this is 146 point 1900, not 9. 1900 divided by 1360. 139. 0.71. 139.71 or 70. Okay. So
One more for last pair. Yes, Nanda, it is enough. Last pair index. So L is equal to summation Pn Q0. See, whenever you're practicing, write down this formula with your hand, and then, because this you can directly do on the calculator. That is not a problem. But for you to remember, they will give you these figures, and then you should know which of these you have to use. Okay, so summation Pn Qn upon summation P0 Q0 into 100. Okay. So how much is Pn Q0? Pn Q0 is 600. P0 Q0 is 240 into 100, which is equal to how much? 250. Now let us go to the next one, which is talking about Marshall Edgeworth. What does the Marshall Edgeworth formula index say? It is equal to summation of Pn Qn plus Q0 upon summation P0 Qn plus Q0 into 100. Okay. Now I will multiply this. This is equal to summation Pn Qn plus Pn Q0 upon summation P0 Qn plus P0 Q0. Okay. So how much is this? Into 100 is always there. So I have summation Pn Qn plus summation Pn Q0 upon summation P0 Qn plus summation P0 Q0 into 100. Okay. So Pn Qn is how much? 1004 plus Pn Q0 is 962. P0 Qn 1095 plus P0 Q0 1053 into 100. So how much is this? 1004 plus 962 is 1966. 1966 upon 8, 14, 2148 into 100 divided by 2148, 91.53. 91.53. Okay. So we have taken Marshall Edgeworth example also. हाँ साची बोल के रखा है, जैसे पता लगेगा बता देंगे आपको. यस, बालाजी, अनुज, कृतिका, अनुष्का, तांबेश्वरी, Nancy. Excellent, excellent. You solved faster than me. Very good. Okay, there is this concept. I'll just take the formula first. Okay. यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं. What do you mean by dearness allowance? See, what happens is that any person gets his salary, okay? He gets his salary, but what happens is that the prices may shoot up
and the salary is not able to keep up with the rise in prices. जैसे शुरू में बताया था ना मैंने कि जो हमारी आमदनी है, अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो आमदनी मैच नहीं कर पाती उस महंगाई से। तो जो एम्प्लॉय है वो टेंशन में रहता है, वो स्ट्रेस फ्री काम नहीं कर पाता। तो कंपनी क्या करती है, उसको डियरनेस अलाउंस देती है। डियरनेस मतलब जो डियर हो गया है, मतलब इंग्लिश में things become dearer means becomes costlier also. सो जो डियर वर्ड है वो कॉस्टली के हिसाब से यहाँ पे यूज किया है। डियरनेस अलाउंस मतलब जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसको थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए हम उस व्यक्ति को डियरनेस अलाउंस देते हैं। आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को का डीए बढ़ गया। हाँ, तो डीएम बढ़ गया मतलब क्या हो गया कि लुकिंग एट द प्राइस इंडेक्स दैट इज देयर, लुकिंग एट हाउ द प्राइसेस आर मूविंग, देन so based on that we are going to increase our this thing. So what happens here is you have what is known as consumer price index. So what happens is इस एग्जांपल में देखते हैं, नेट मंथली सैलरी फॉर एन एम्प्लॉय वाज 3000 इन द ईयर 2000. So salary in the year 2000, how much was his salary? Rupees 3000. The consumer price index in 2005 was 250 with 2000 year as base year. Base year is 2000. Consumer price index in the year 2005 with base year 2000 is how much? 250. How much should the DA be paid by the company? ठीक है. Now this question has two parts to it. This 250 means what? If salary in the year 2000 was 100 rupees, his salary in 2005 should be how much? Rupees 250. किसी बंदे की ईयर 2000 में 2000 साल में अगर उसकी सैलरी 100 रुपए थी, रुपीस डालते थे, तो अब 2005 में उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 250 रुपए. अभी नेट मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वाज 3000 इन ईयर 2000. ओके, इफ सैलरी was rupees 3000 in year 2000, his salary in 2005 should be प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं उस हिसाब से कितना होना चाहिए? रुपीज 250 अपॉन 100 इंटू 3000. ठीक है, तो मतलब उसकी सैलरी कितनी आनी चाहिए थी? रुपीज 250 इंटू 3 इज 7500. ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, मतलब उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 7500. लेकिन उसकी जो बेस सैलरी है वो चेंज नहीं हुई है. तो दैट मीन्स डियरनेस अलाउंस will be equal to rupees 7500 माइनस 3000. जो बेस सैलरी है ना उसको हटा के तो कितना आता है? रुपीज 4500 should be the dearest allowance. This dearest allowance will help him overcome the increase in prices. Okay, so this is his value. So how much dearest allowance should he be paid to rightly compensate?
नंदा CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करके बताती है अपने को। बोनस इंसेंटिव नहीं होता नंदा, जैसे बताया ना कि खर्चा जो है महंगाई को मात करने के लिए वो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कृतिका करेक्ट, अनुज करेक्ट। बोनस कब मिलता है कि आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इसलिए मिलता है। इंसेंटिव किस लिए होता है, एक तरह से इंसेंटिव बोल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक ह्यूमैनिटेरियन बात है कि जो आदमी काम करने में उसको आसानी हो इसलिए वो किया रहता है। CPI बताया, अब भी बताया ना, कहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Now salary is raised from 300 to 500 and consumer price index goes from 100 to 200. Find the real wage. Okay, this is the formula for real wage. Now real wage is equal to nominal wage of current year. Current year. Into consumer price index of the base year. Consumer price index of the base year upon consumer price index of the current year. A salary is raised from 300 to 500 and CPI goes from 100 to 200. ये क्या हो गया? CPI of the base year. ये क्या हुआ? CPI of the current year. ठीक है? Find the real wage. So अभी nominal wage कितना है? And this 500. ये दो में से कौन सा? ये है मेरा nominal wage. So this is 500 into base year is 100. CPI is 100. Current year it is 200. So that is the real wage is how much? 250. Okay. So दिखने में 500 लगता है, लेकिन the real wage is how much? 250. The price index number in 2000. Price index number in the year 2010 was 286. Price index number अच्छा with 2000 year as base. Okay, so base is year 2000. Okay, so when I say base year is 2000 means how much is the value? 100. So how much is the increase? Increase in price. Increase in price will be equal to new price minus base price. कोई चीज जो 100 रुपए की थी अब वो कितनी हो गई? 286. सो ये कितना हो गया? 286 minus 100. सो हो गया ₹186. Okay. So what is the average increase in price? Average increase in price is 186. The price index number is in 2020 is 225 with 2000 as base year. Find the average increase in price. Same like earlier one. So what do I have? Average increase in price is equal to new price minus base price. New price is how much? Rupees 225 minus base price is 100. So this is rupees 125. Now, if they want the increase percentage will also be 125%. In terms of percentage also, you get the same answer. Because we are taking base as 100. Okay.
हम लोग बेस जो है उसको 100 बोल रहे हैं, इसलिए वो हो रहा है। ओके, हाउ मच इज दिस? हाउ कैसे नहीं, वो दे देते हैं कि 250 रुपए हम देने वाले हैं। ठीक है नंदा। रेणु का 100 हम बेस लेते हैं ना, एकदम आज शुरू में हम लोग ने एकदम शुरुआत का लेक्चर का पहले 5 मिनट यही बोला ना कि बेस को हमें 100 लेना है। किसी भी साल का जो है उसको बेस को 100 लेना लेना है। अगर वहां पे 150 है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके 100, बुक में स्टडी मटेरियल में एग्जांपल है, देखिए उसको। मैं बताती हूँ आपको पेज नंबर, उसमें भी आप देख सकते हैं। 18.5 में जो है आप वो देख सकते हैं कि वहां वाला जो एग्जाम्पल है ना, उसको जो है हमने बेस ईयर को 100 में किया है। लेट मी शेयर इट विथ यू। देखती हूँ बुक खोला है कि मैंने। एक मिनट। सी लाइक ओवर हियर, ये सिंपल एवरेज वाला है पेज जो है। See, in 1998, these three things is commodities ABC, the total cost was 300 rupees. उसको हमने इंडेक्स में क्या किया, इसको 1998 को बेस ईयर बनाया तो उसको 100 रुपए लिया, 300 को 100 लिया, तो उस रेट से 365 को 121.67 लिया। सो हाउ वी कन्वर्टेड दैट? So this will be 365 upon 300. 365 डिवाइडेड बाय 300 आता है 121, 1 इंटू 100 भी है ना, तो ये हो गया 121.67। ये आ गया ना, ये 121.67 यहाँ से आया। ठीक है, सो यू टेक एनी ईयर एज द बेस ईयर, उसको आपको 100 करना है। सो 300 को 100 किया है, तो उसके बाद बाकी के उस हिसाब से 1998 को 100 किया, तो उसके हिसाब से चेंज कितना हो गया। अब यहाँ से आप देखो, डायरेक्टली देख सकते हो 121.67 मैंने क्या हुआ, 21% राइज। हियर 118 इज 18% राइज विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कविता, द पीडीएफ हैज बीन अपलोडेड। ये सारे एग्जाम्पल मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं, आप जो है वहां से देख के कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए मैंने पीडीएफ में भी जगह छोड़ी है, तो आप वहीं पे तुरंत वापस अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो भी आप वहां पे जो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और वहां पे आराम से आप लिख सकते हैं सोल्यूशन भी। हम्म बाकी जो हमारे उसके रहते हैं, जो टेक्स्ट बुक में है वो तो है ही। ओके। Monthly salary for Ram was 10,000 in the year 2000, in 2020, and it increased to 20,000 in 2023. While consumer price index is 240 in the year 2023, with 2020 as the base year. What should the salary be? Okay. Consumer price index is equal to what? Year price is how much? What is 240 is the consumer price index is 240. प्राइस ऑफ द करंट ईयर इज हाउ मच, व्हाट शुड हिज सैलरी बी, वही पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए।
उन्होंने दी कितनी है, 20,000 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? उसको 2020 में 10,000 सैलरी थी, अब उसकी बढ़ के 20,000 हो गई। अभी हमें ये देखना है कि ये जो इन्फ्लेशन है, जो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से वो सही बैठ रही है कि नहीं, उसको जो 20,000 अब सैलरी मिल रही है वो सही हो रही है कि नहीं। ओके, सो 240 इज इक्वल टू पीएन, वी वांट टू फाइंड द प्राइस ऑफ द इन द ईयर 2023, व्हाट इज द सैलरी। पी यहाँ पे सैलरी है, अब उसको, अच्छा मैं चलो वर्डिंग बदल देती हूँ, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। So CPI here will be equal to salary in the year 2023 upon salary in year 2020 into 100. CPI I know is 240, that is given to me. Salary in the year 2023 I don't know. Salary in the year 2000 is 10,000. आप बोलेंगे यहाँ तो दिया है ना 20,000 सैलरी 20, ये तो वो दे रहे हैं, कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी हिज सैलरी, कितनी होनी चाहिए वो पूछ रहे हैं। ओके, into 100. So salary in the year 2023 will be equal to 240 into 10,000 upon 100, which is equal to rupees 24,000. तो कितनी होनी चाहिए, 24,000, मिल कितनी रही है, 20,000 है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट सफिशिएंट। This is a good example. If prices rise by 10% and wages rose by 20%, the real wage increased by how much? Prices rise by 10% and wages rose by 20%. Okay. Yes, Renuka, now understood. Very good. Avni, very nice. After long time, you've answered, Avni. Nancy, yes, correct. Anjali, Anush, Balaji, Kritika. Very good, very good. Wage in the base year is how much? 100 rupees. Wage in the current year will be equal to rupees 100 plus 20% rise, na? 20% rise. तो ये हो गया rupees 120. Okay. Now, price in the base year is 10%. Price in the current year will be equal to, oh no, price is, sorry, 100. Rupees 100. So this will be rupees 100 plus 10%, which is equal to rupees 110. So real wage rise will be equal to, क्योंकि सैलरी 20% से बढ़ गए लेकिन प्राइस भी बढ़ गए हैं, तो रियल वेज कितना बढ़ा है, तो दिस इज इक्वल टू रुपीज 120 अपॉन रुपीज 110 इंटू 100, कितना हो गया, 120 divided by 110, 1.09, which is 1.09%. That is, how much is the increase? Real wage increase is equal to 9%. ओके, ये 1.09 है ना, तो 1 निकाल दो तो ये 9% है, 109, ओ सॉरी 109 कितना हो गया था,
109.09 109.909. Okay, so this is 9.09%. ठीक है. Okay, salary received in 2020 is 160, CPI in 2020 is 313. Find the real wage. Okay, so real wage is equal to nominal wage into CPI of base upon CPI of current. Okay, so nominal wage is how much? 160. CPI of base जो है हरदम 100 रहता है अपॉन 313. इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आता है? 51.12%. Okay, so these are the sums. Now once you've understood the price index numbers, you can easily now go in for the quantity index numbers. What I suggest is you do thoroughly one. आपको क्वांटिटी इंडेक्स अच्छे लगते हैं और वैसा कर लीजिए, आपको प्राइस इंडेक्स लगते हैं वैसा कर लीजिए, लेकिन एक चीज आप थरोली करेंगे उसके बाद ही दूसरे पे शिफ्ट हो जाइए, वरना बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, वो डबल वाले फॉर्मूले हो जाते हैं. Now, in the weighted method for quantity index, what we are showing is last buyer's index is minus index base year prices are used in last buyer. What you do is index base prices are used as weight. बात वही है, बेस ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां हम क्वांटिटी कर रहे थे, यहाँ हम प्राइस को बेस ले रहे हैं. ठीक है, बेस ईयर के प्राइस को हम लोग जो है वो उसको हम वेट यूज कर रहे हैं. जो प्राइस इंडेक्सेस कैलकुलेट किए हैं वहां क्वांटिटी को वेट लिया है, और जब क्वांटिटी इंडेक्स करते हैं तो हम प्राइस को बेस लेते हैं, को वेट लेते हैं. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन. जब हम प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी को वेट लेते हैं, जब हम क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस को वेट लेते हैं. ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आपके पास दिए हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं. ठीक है, वही है. Last buyer index base year prices are used as weight. Pache current year prices are used as weight. Value indexes is summation Vn upon V0. जो अभी की वैल्यू है divided by the previous value. इसके भी वैसे ही फॉर्मूला है. अब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो आपके थ्योरी में भी आप पूछे जा सकते हैं, उनको सिर्फ मैं दिखा रही, क्योंकि जो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं वो तो शायद अब निकाल भी दिए स्टडी मटेरियल में से, स्प्लाइसिंग और इसके दिए हैं, कुछ तो दिए हैं. तो हमें कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ जाए तो उसका आसानी हो जाएगी अपने को करने के लिए. Deflating time series using index number. Deflating the time series using deflation is the process of removing the effects of price inflation from the data. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, वीकली वेजेस, उन सब के लिए हम ये करते हैं. तो डिफ्लेटेड वैल्यू इज इक्वल टू करंट प्राइस upon price index of the current year. Once I divide that, I will get the deflated value. Okay, that is deflation. The example of this is given on page number 18.10. You can refer to page 18.10 for the example. So deflation, what does it do? It removes the effect of price inflation. Shifting, original price index and price index of the year to which it has been shifted. So what happens is sometimes, like, there is a marked difference now. So what we do, we change the base year. Okay, so here what we are doing, original price index upon the price index of the year to which it has been shifted is known as shifting. Then splicing, when there is a major change in quantity, weight, two set of price indexes covering two different time periods, splicing is done. जब आपके इसमें ना बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो आपके जो आपके पास डेटा है ना, उसको आप दो सेट्स में डिवाइड कर देते हैं. इसका जो एग्जांपल है डिफ्लेटिंग तो 18 पॉइंट, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग भी उसके तुरंत बाद ही आपको एग्जांपल दिख जाएगा.
So when there is a major change in quantity weight, two sets of price covering two different time periods, splicing is done. So this is more of the theory question than you will get a data set and be asked to calculate, because this is more like you need to solve and show. So it's not an MCQ type of sum that you can get. So it's more of the theory question. ओके सो शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग. डिफ्लेशन में क्या होता है, हमें प्राइस इन्फ्लेशन निकालना है, इसलिए हम डिफ्लेट करते हैं. डिफ्लेट मतलब दब जाना. जैसे हमारा टायर डिफ्लेट हो जाता है, मेरा बलून डिफ्लेट होता है. जो बड़ा बलून फूला रहता है उसको जब पिचक जाता है, होली के समय भी जो हमारे गुब्बारे पिचक जाते हैं, तो वो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं. शिफ्टिंग में क्या हो जाता है, हम एक प्राइस इंडेक्स से दूसरे प्राइस इंडेक्स की ओर जाते हैं. ईयर हमारा चेंज होता है. स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है ना वो दो सेट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, डिफ्लेशन में प्राइस इन्फ्लेशन निकालते हैं. शिफ्टिंग में हम एक ईयर से दूसरे ईयर में, बेस ईयर में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं. और जो स्प्लाइसिंग है, जो हमारा डेटा है उसको दो सेट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उससे हमें ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सकती है. फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, ये स्प्लाइसिंग के दो टाइप्स है, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग. Forward splicing, if all index numbers are calculated using the new base year. Backward splicing, if all the index numbers are calculated using the old year. तो BO कर लो, इसको याद रखने के लिए. बैकवर्ड के लिए ओल्ड यूज करना है, फॉरवर्ड के लिए न्यू, FN. फॉरवर्ड के लिए हमें न्यू बेस ईयर यूज करना है. Then a very important concept is the test of adequacy. टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मीन्स क्या होता है, ये जो हमने लापास, पाशे और ये जो कैलकुलेट किए हैं फिशर, वो हमारा जो इंटरचेंज कर ले, अगर हम न्यू को ओल्ड और ओल्ड को न्यू डेटा में अगर शिफ्ट कर ले, तो वो जो वैल्यूएशन है, मतलब जो मेथड है और जो जिस तरह से हमारा रिजल्ट आता है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए. जस्ट बिकॉज आई इंटरचेंज द ईयर और इंटरचेंज द वैल्यूज, दिट शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट. तो उसको हम टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बोलते हैं कि कौन से जो हमारे ये जो इंडेक्सेस हैं, वो कौन से खरे उतरते हैं उस चीज के लिए. So we want to check whether the index numbers we computed are accurately represents the changes in price, quantities or values of the product over time. उसके लिए क्या है, हमें पहला देखना है कि relevance of basket. We need to ensure that the basket of goods used to compute the index number is representative of the goods consumed by the consumer. Like in the case of Sensex, we are saying that what we are doing, we are taking the Nifty 50. So each of the company that has been selected into that Nifty 50 is other companies, those are representing the sector from which they are coming. Okay. Then data quality. We need to ensure that the data used to compute the index numbers are accurate and reliable. जो इंफॉर्मेशन, जिस डेटा पे हम ये सब कैलकुलेशन करें, वो तो सही होनी चाहिए ना. पता लगे वो डेटा में कलेक्शन के समय कुछ गलती हो गई, या कंप्यूटर में फीड करते समय किसी से एरर होती जा रही है बार बार, तो वो देखना है हम. तो हमें पहला देखना है कि हमारी जो बास्केट ऑफ गुड्स है, जो बास्केट ऑफ गुड्स जो जिससे हम ये बास्केट करके और जिससे हम ये इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है सब चीजों के लिए. दूसरा डेटा क्वालिटी है, जो डेटा हमने गैदर किया है, जो नंबर्स हमारे पास हैं वो सही है कि नहीं. और थर्ड है बेस ईयर सिलेक्शन, हम किस चीज को बेस ईयर यूज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. सपोज हम अभी इन्फ्लेशन जो है यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद के अराउंड का देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से क्या फर्क पड़ रहा है. तो जो वॉर है वो कब शुरू हुआ वो हमें देखना है. तो वो वॉर जो है हम जब देख रहे हैं, उसमें हम ये बेस ईयर हम 1947 नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय इस वॉर का इम्पैक्ट नहीं था. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक द वैल्यूज just nearer to when the war has started as my base year, and I have to see the impact after the war has started, and now 4 years 5 years down the line how the war has affected us. So the base year selection is also very important. So what are there are many other factors, I'm just talking of the first three: relevance of the basket, data quality and base year selection. So for what are the tests to check whether what indexes we have calculated are correct or not?
Factor reversal test. This test assesses whether reversing the base and the comparison period in an index calculation results in a reciprocal. ठीक है, हम अगर मेरा ईयर 2024 है अभी करंट ईयर, और मेरा बेस ईयर 2020 है, तो और उसका सपोज आया वैल्यू 120, तो अगर मैं इसको बेस ईयर लेती हूँ तो ये आता 120, लेकिन अगर मैं इसको बेस ईयर लेती हूँ और ये वाला कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ तो इसको 1/120 आंसर आना चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल. If the index passes this test, it means that switching the base and comparison period does not affect the result. Okay. यूनिट टेस्ट. यूनिट मतलब जो जैसे किलोमीटर है, मीटर है, केजी है, वो वाले यूनिट अगर मैं चेंज करती हूँ तो उससे मेरा आंसर चेंज नहीं होगा. This test examines whether the index remains unchanged if the unit of measurement changes. So suppose मेरा अगर मेरा कुछ रनिंग वाला है, तो इफ आई एम कैलकुलेटिंग इन किलोमीटर्स एंड देन इफ आई एम कैलकुलेटिंग इन मीटर्स, my answer should come to the same. Like if I get this answer as 240, इसमें यूनिट लेने से भी मेरा आंसर 240 आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट. So time, unit and value. So test of adequacy means if I interchange the base year and the current year, I should get the same result. मतलब 1 upon करके. Unit index should not change if I change the unit, and value index should be the product of price and quantity index. Okay. कोई सा भी फैक्टर लेके कोई सा भी यूनिट लेके करो, वो जो प्राइस इंडेक्स आएगा, क्वांटिटी इंडेक्स आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए. तो यूनिट टेस्ट, इसको समराइज करेंगे. यूनिट टेस्ट क्या देता है? फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट. टाइम रिवर्सल टेस्ट से P01 इंटू P10, मतलब बेस इंटू करंट और करंट इंटू बेस करो तो आंसर 1 आना चाहिए. फिशर्स मेथड, ये जो है ये फिशर मेथड सेटिस्फाई करती है. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, P01 into Q01 is equal to V01. Fisher method satisfies this. Ideal index. Index which satisfies both the time reversal and factor test is known as the ideal index. Okay. Index which satisfies both the time reversal test and the factor. ये दोनों जब satisfy करता है तो उसको हम ideal index बोलते हैं, कि मतलब उसको एकदम perfect हो जाता है ना, कि दोनों चीजें कुछ भी change करो आपको वही आंसर मिल रहा है. Circular test used when base has shifted. Laspire, Pache and Fisher method do not satisfy this. Only geometric mean, ये वाला ना ये theoretical है, इसको आप याद करना पड़ेगा. Only geometric mean of price relatives and weighted aggregate of fixed weights satisfy this. तो ये जो circular test है when base has been shifted, तो ये मैं तीनों में से कोई satisfy करता नहीं है, लेकिन ये करते हैं. ओके, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है. आप थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड वेट्स. Okay, so Laspire, Pache and Fisher indices have their strengths and weaknesses. Fisher indices generally perform better than Laspire and Pache in terms of satisfying additional tests such as factor reversal, unit test and circular test. तो ज्यादा ये होता है. तो अभी इसको मैं बताती हूँ. This is a chart that I've given it to you also. Test is unit test, which is satisfied by the Laspire, satisfied by Pache and satisfied by Fisher. Unit test. Except for simple aggregate, this happens. Time reversal only satisfied by Fisher. Factor reversal satisfied by Fisher. Circular test is satisfied by simple geometric mean of price relatives and is satisfied by weighted aggregates with fixed weights. And these do not satisfy. ये जो yellow वाला है वो satisfy नहीं हो रहा. Okay. Okay, so deflating, shifting, splicing, forward splicing, backward splicing. Okay. मधु, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के बाद में, वो वाले कर लीजिए. बहुत सारे हैं वहां पे, आप उतने सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए. हाँ, क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी रिलेटेड है. एक मिनट में आपको दिखा दूं.
You just have to go through your study material thoroughly. जब तक आपको पूरा बुक अच्छे से ना हो जाए ना, आप दूसरे बुक की ओर जाए ना। स्टडी मटेरियल आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, देखिए आपके पास यहाँ पे सारे थ्योरी क्वेश्चंस दिए। इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब रिलेटिव है, परसेंटेज है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे वो आपको दिखना है। ओके, so there are a lot of theory questions here, so you could do those. Anush, thank you. Yes, thank you. Yes, very good. Forward is new base, backward is old base. Anushka, thank you. Yes, thank you. Yes, Anushka, weightage of this chapter is 10 to 15%. Sonam has understood. Ashinka is saying thank you. Okay, she's saying thank you, ma'am, for your amazing lecture. Yes, I'm also very happy that all of you are such good students. Okay, so shall we stop here for the day? Thank you.